Hello everyone. So today I'm going to install uh, LEDs on my mirrors. So it will work as a mirror indicator. It will look very pretty when you will turn on in nights. So what I did that put some I have put some MCL over here so that it holds tightly. And as you can see, this is in process putting MCLs so that it will protect from rain and it will never fall off. It will be very strong as concrete. As you can see now, it's been 5 minutes and it's become so strong. And then I will show you the wiring, how to do wiring. Now I will show you the wiring. तो मैंने ये निकाल दिया है और अभी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वायर आप लोग देख रहे हैं, ये जो वायर है, इन दोनों वायर से मैं यहाँ से एक छोटा वायर काट के लेके जाऊँगा यहाँ से अंडरग्राउंड करके, फिर ये आएगा ऐसे करके, ऐसे लेके जाऊँगा अंडरग्राउंड करके। इसके बाद जो ये है, जो इंडिकेटर का जो सॉकेट है, उसमें मैं ये जो दो वायर है उसको, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में डाल दूँगा। उसके बाद इसको बंद कर दूँगा। बस यही काम है, इतना ही काम है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और अभी मैं इसको टाइम वेस्ट में करता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। तो मैंने ये वायर को पूरा छील लिया है और आपको भी ऐसा छील लेना है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे करके लेके जाऊँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा। तो मैं अभी इसका पूरा टाइम लैप्स शूट करूँगा और इसके कंप्लीट होने के बाद फिर से एक वीडियो करूँगा।
उठा यार तू